Hello everyone. This is a video related to something which I'll be starting from now on. As we all know, due to coronavirus, which will go soon, but yes, it is now there and everyone is sitting at home. You are unable to go to your schools. So for that, I have geared up, and I'll be uploading 3 videos every day, one for 10th, one for 11th, and one for grade 12th. So every day the video is going to be uploaded, and it will be uploaded by around 8 p.m. in the evening, at night, because most of you come online mostly at night, and in day you'll have your own school studies and all. Your teachers will be sending you materials, or you'll be having your online classes the way your school is going to do. But yes, for my videos, you can watch these videos after 8 p.m. They'll be uploaded maybe between 7 to 8. I'll be uploading them. So one for grade 10th, one for grade 9th, one for grade 10th, one for 11th, and one for 12th. Grade 10th, 11th and 12th, ICSE, CBSE both. So I am not focusing here on one board. I'll be focusing on all around topic. We'll be doing the whole thing. As we all know, for grade 10th ICSE, the whole syllabus is complete and it is there on the channel. It's in English, but on the request of many of you people, I have started with Hindi bilingual. That means I'll be explaining in Hindi, but the terms remain English bilingual, which has been started already. So the 10th grade video which will be uploaded will be bilingual. 11th will be 11th and 12th, the general videos. But still, in that bilingual video, I'll be giving the link for the same video which has been made in English as well in the description box, or it will be given in the iCards which come on the top of the video, or at the end of the video we have annotations. So in that I'll be inserting the same video in English as well. So the kids who are comfortable in watching in English can watch those videos. The ones who are comfortable in Hindi as well can watch the same. Now I'll be repeating the same in Hindi for the ones who can't understand or who have a little. Everyone can understand English, but yes, थोड़ा बहुत. So बच्चों, आज से I'll be uploading 3 वीडियोज़ मैं रोज़ अपलोड करूँगी. एक 10th के लिए, एक 11th के लिए और एक 12th के लिए बायोलॉजी. 10th जो बाइलिंगुअल आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने बनाने शुरू करे थे वही अपलोड होंगे. साथ में अगर आपका कोई फ्रेंड है जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है, उसके लिए उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, या फिर ऊपर जो आई कार्ड्स आते हैं उसमें, या फिर वीडियो ख़त्म होने पे जो एनोटेशंस आते हैं उसमें. बट मैं आपको उस इंग्लिश वीडियो का लिंक भी उसमें दूंगी, ताकि कोई अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में देख सकता है, नहीं तो बाइलिंगुअल में देख सकता है. 11th और 12th के जो बच्चे हैं, जनरल वीडियोज़ जैसे हमारे डिस्कशन चल ही रही है, जैसे हम कॉन्टीन्यूअस 11th और 12th का हमारा चल ही रहा है, वैसे ही it will start we'll start with it. So now I am geared up, you also gear up yourself, so that every day you get something to study. Start your topics. अगर आपको पीछे से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने अभी करने हैं, बट मैंने वीडियो बना दिया है, यू कैन वॉच इट. अगर नहीं तो आप साइमल्टेनियस कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू. लेकिन आप लोगों की हेल्प के लिए 10th, 11th एंड 12th आई विल बी अपलोडिंग एवरी डे. तीनों ही वीडियोस रोज़ आपको 7 to 8 के बीच में, 7 to 8 p.m. इवनिंग में यू विल गेट दीज वीडियोज़. सो कीप लर्निंग, मेक फुल यूज़ ऑफ दिस टाइम, डोंट वेस्ट इट. इसको छुट्टियां नहीं समझो, पूरा अच्छे से पढ़ाई करो, और ये मत सोचो कि अच्छा अब हम छुट्टी पे हैं. नो, यू नीड टू स्टडी. ओके, सो प्लीज़ स्टार्ट स्टडिंग, स्टार्ट लर्निंग. बी हैप्पी, स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस एज वेल.